जगत का मिटा अंधेरा, आज जगत का मिटा अंधेरा, जाग उठा है नया सवेरा, जाग उठा है नया सवेरा। सबको जगाओ संदेश सुनाओ, सबको जगाओ संदेश सुनाओ, जगत पाल आया, आया यीशु राजा, आज जगत में आया, आया यीशु राजा। नमन तुझे मेरा, महान है तू शिशु राजा, अमर तिहारी महानता। नमन नमन बालक यीशु, नमन तुझे मेरा, महान है तू शिशु राजा, अमर तिहारी महानता। युगा युगा। Dear Heavenly Father, as we gather to celebrate the joyous season of Christmas and the New Year, we come before you with hearts full of gratitude. We thank you for the gift of Jesus Christ, our Savior, whose birth we celebrate during Christmas. May His love, peace and joy fill our hearts and homes. As we step into the new year, we thank you for the blessings of the past year and for the opportunities that lay ahead. May we be filled with hope, faith and courage to face challenges. We pray for your continued guidance, protection and blessings upon us, our families and our communities. Thank you for your goodness, mercy and love. We offer these prayers in the name of Jesus. Humility and reverence. Through language of movement, we offer this prayer dance as a symbol of our devotion and worship. May our spirit be lifted, may our soul be nourished, and may our body be used as instrument of praises. The performers are ready with their devotion-filled steps. Everyone, please give them a huge round of applause.
Next up, we have a wishing song spreading happiness and warm wishes to everyone here today. This song will surely fill the atmosphere with the Christmas cheer. Let us welcome our singers on this stage. बीबी मरियम उसे सुलाने मीठी लोरी गाती है, बड़े प्यार से उसे सुनाने कानों पे सहलाती है। बीबी मरियम
देखो आया यीशु जग में, सारे जग का वो राजा है। देखो आया यीशु जग में, सारे जग का वो राजा है। झूमो नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ। झूमो नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ। यीशु पैदा हुआ, यीशु पैदा हुआ, यीशु पैदा हुआ। झूमो नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ। नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ। बेथलेहम की छोटी नगरिया चमका सितारा रे। चरनी में आया यीशु मसीहा, दूतों ने गाया रे। बेथलेहम की छोटी नगरिया चमका सितारा रे। चरनी में आया यीशु मसीहा, दूतों ने गाया रे। यीशु सबका आया हो, यीशु सबका आया हो, यीशु सबका आया। झूमो नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ। झूमो नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ। राजा सब घबरा ही गए थे यीशु के आने से। चार बार ढूंढवाया यीशु को, पाया पता ना रे। राजा सब घबरा ही गए थे यीशु के आने से। द्वार द्वार ढूंढवाया यीशु को, पाया पता ना रे। सबका आया हो, यीशु सबका आया हो, यीशु सबका आया। झूमो नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ। झूमो नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ। We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Good tidings to bring to you and your kids. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year.
मिलता आया है. Now it's the turn of cutest and youngest stars of our school. The little ones from LKG and UKG are ready to dance and melt our hearts with cuteness. Their tiny steps and sweet smile make every celebration special. Please welcome them with a big round of claps. Melt our hearts. Please give them a huge round of teachers and all my dear friends. I am Arif and I am Shafaq. Today I am very happy to speak about the festival of the most joyful and beautiful festival celebrated all over the world. Christmas falls every year on 25th December and people wait for this day with great excitement and happiness. This festival fills the whole environment with light, color, music and joy. Homes, schools and churches looks very pretty during this time and everyone enjoys the festival mood. Christmas is celebrated to remember the birth of Jesus Christ, who is also known as the light of the world.
Jesus taught us the important values like love, kindness, and honesty. He told us to care for poor and forgive their mistakes and spread peace wherever they go. When we celebrate Christmas, we just not only enjoy our festival, but we also remember the teachings of Jesus Christ. During Christmas, people decorate their homes with colorful lights, stars, candles, and beautiful ornaments. The most special decoration is the Christmas tree, which is decorated with bells, ribbons, and shiny items. The tree looks very bright and lovely at night. People also bake cakes, cookies, and share sweets with friends and family. Churches looks very wonderful with lights and flowers, and beautiful sing Christmas carols like Jingle Bells and Silent Night. This song brings a feeling of peace and happiness to everyone. One of the happiest moments for Christmas for our children is the arrival of Santa Claus. Children believe that a Santa comes on his riding tail at night and brings gifts, toys for them. Santa is known as a man with a white beard, wearing a red suit, carrying a large bag full of surprises. Children wait excitedly for him, and the idea of Santa Claus makes the festival even more fun and magical. Christmas also teaches an important lesson of kindness and sharing. This festival reminds us that we should help the poor person, be kind to everyone, and spread joy and wherever we go. Love, happiness into your life. May we continue the message of Jesus Christ. Thank you. Merry Christmas. Let's give a massive round of applause for the wonderful speech. And now, get ready for some entertainment. A Christmas skit prepared by our students to remind us true spirit of the Christmas. This skit will remind us of the true message of Christmas love, kindness, and sharing. Please enjoy the performance. Look, Angel Gabriel, everything is so beautiful and wonderful. There is happiness and joy everywhere. Yes, everything looks nice and wonderful, But what? I love the Christmas season because it has gifts, stars, candles, cakes, savories, chocolates, Christmas tree, and my favorite Santa Claus. but all these do not signify or tell us about the birth of Jesus. Do you know what is the real gift for mankind and who gave it? Gifts? Oh, I love gifts. Gifts that too for mankind. Yes, the real and the precious gift is nothing else but Jesus Christ Himself to save the mankind. Jesus and gift? But how? Yes, God Almighty gave His only begotten Son for the mankind as a gift. But how did it come as a gift? Was he wrapped in a big box and in wrapping paper? No. Come, I will tell you how Jesus came to this earth and became the real gift and reason of joy for us all. The angel of the Lord was sent to a virgin named Mary, engaged to a man whose name was Joseph. The angel said to Mary, Greetings, favored one. The Lord is with you. Do not be afraid, Mary, for you have found favor with God. And now you will conceive in your womb and bear a son, and you will name him Jesus. He will be great and will be called the Son of the Most High.
And the Lord will give to him the throne of his ancestor David, and of his kingdom there will be no end. But how can this be, since I'm a virgin? The Holy Spirit will come upon, and the power of the Most High will overshadow you. Therefore, the child to be born will be holy. He will be called the Son of God. Here am I, the servant of the Lord. Let it be with me according to your word.
days, a decree went out from Emperor Augustus that all the world should be registered. So, all the people went from the town of Nazareth in Galilee to Judea, to the city of David called Bethlehem, because he was descended from the house and family of David. But there was no place for them in the inn. So she gave birth to her firstborn son.
for you. You will find a child wrapped in swaddling clothes and lying in a manger. When the angels had left them and gone into heaven, the shepherds said to one another, Let us now go to Bethlehem and see this thing that has taken place, which the Lord has made known to us. Came to Jerusalem, asking, Where is the child who has been born King of Jews? For we observed his star at its rising and have come to pay him homage. When they had heard from the then king of Jerusalem, King Herod, that baby Jesus was born in the city of Bethlehem, they set out, and there, ahead of them, went the star that they had seen at its rising, until it stopped over the place where the child was.
वही की है, सफर दूर का पीछा दूर का करके हम आए हैं। आए रात तारे आजुबा, शाही तारे खुशनुमा, आगे चल कर दिखा तारे नूर तक पहुंचा। मैं लोगान देखने आया हूँ, ताकि मुकद्दस को दूँ। दूर में लाया मौत का निशान, होगा वो गमगीन परेशान। सोना लाया मैं की बचा, बैतलहम में जिसकी बाजार। खूब ताजदार हो और अश्कार हो, अब भी शहंशाह। I bring to crown you. Frankincense to offer have I. There is mine, an offering to you. So now, do you know how Jesus came to this world? Yes, but I didn't see any Christmas tree, lights, candles, and Santa Claus anywhere. I saw only the bright, shining stars. Yes, the bright star was the guiding star that led the three kings to Jesus, the King of Kings and the Lord of Lords, who humbled down himself as a human and was born in a manger. But Angel Gabriel, you told me that God gave Jesus for us. Why did you send him for us all? God, our Father, sent him on earth to save us all from our sins and give us the everlasting joy. As in his holy word, which is written in John chapter 3, verse 16, that for God so loved the world that he gave his only begotten Son, so that whosoever believes in him may not perish, but will have eternal life. Now I understood that this Christmas tree, Santa Claus, decorations, candles, stockings, bells, all these things are added by human beings with Christmas, and they do not have any significance. But the real gift of Christmas is only and only Jesus Christ, who came to this earth for you and me. Give them a huge round of claps. Following that, we have a Hindi speech by another talented student of our school, sharing the messages on the Christmas. Let's invite the speaker on stage. Please welcome them with a big round of applause. खुदा से क्या मांगू तेरे वास्ते, खुदा से क्या मांगू तेरे वास्ते, सदा खुशियाँ हो तेरे रास्ते। आप सभी को क्रिसमस और आने वाले नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं अनुप्रिया टावर हाउस कक्षा 4 की छात्रा, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं क्रिसमस और आने वाले नए साल की अहमियत बताने जा रही हूँ। आज हम यहाँ एक विशेष अवसर पर एकत्रित हुए हैं, एक ऐसा समय जब साल का अंत होता है और नए की शुरुआत होती है, जब दो महान भावनाएं क्रिसमस और नया साल एक दूसरे से मिल जाती हैं। क्रिसमस सिर्फ एक त्योहार नहीं, यह प्रेम, शांति और भाईचारे का
संदेश है। यह हमें याद दिलाता है कि जीवन में देने का महत्वपूर्ण क्या है। सेंटा क्लॉज की कहानियाँ हमें निस्वार्थ भाव से खुशियाँ बांटना सिखाती है। यह एक रोशनी का पर्व है जो हमारे जीवन के अंधकार को दूर कर आशा का संचार करता है। और फिर आता है नया साल, एक खाली पन्ना जिस पर हमें अपनी सफलता और खुशियों की नई कहानी लिखनी है। नया साल सिर्फ कैलेंडर की तारीख का बदलना नहीं, यह एक अवसर है आत्मनिरीक्षण का। यह समय है अपनी गलतियों से सीखने का और नए संकल्प लेने का। यह हमें आगे बढ़ने और बेहतर इंसान बनने के लिए प्रेरित करता है। इन दोनों त्योहारों का संगम हमें एक महत्वपूर्ण सीख देता है, हमारे दिलों में प्रेम और शांति। क्रिसमस के संदेश को बनाए रखते हुए एक उज्जवल भविष्य नए साल के वादे की तरफ कदम बढ़ाना चाहिए। पुराना साल नया सवेरा नई किरण के साथ, एक नया दिन प्यारी मुस्कान के साथ। आइए हम सब मिलकर संकल्प लें कि हम अपने समाज को आगे बढ़ाएंगे और जरूरतमंदों की मदद करेंगे। एक बार फिर से आप सभी को क्रिसमस और आने वाले नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। Please give a huge round of applause. Now it's time for a very special moment. Let's welcome our principal with respect and warmth as he shares his message and blessings with us. Happy Christmas to all. मजाई है ना, MAGI, मजाई, ओके, नॉट मैगी, ओके, MAGI. So मजाई, 3 मजाई, wise men, okay. 3 wise men came here and they brought along with them 3, how many gifts? How many gifts? What are their symbolizes or what are they? First of all, anybody, audience? 3 things they presented Jesus. Okay, when we are celebrating our birthday, our friends bring gifts. So also 3 wise men, 3 magi, they brought 3 gifts. First is gold, second is frankincense, and third is myrrh, MYRRH. Okay, it is called myrrh. Okay, not myrrh, but it is myrrh. So सोना, लोबान और गांधरस. ओके, क्या क्या चीज है? सोना, रिपीट कीजिए, सोना, लोबान और गांधरस, 3 चीज है ना। ये 3 चीजें 3 एस्पेक्ट्स को सिंबलाइज करते हैं, है ना, उसको रिफ्लेक्ट करते हैं 3 चीजों को, है ना। ये जीसस के एस्पेक्ट्स को बतलाते हैं। गोल्ड किंगशिप को दर्शाता है, फ्रैंकिंसेंस डिविनिटी को, है ना, भगवान का रूप को, और इंसेंस हम लोग क्या करते हैं जब कोई पूजा पाठ करते हैं या तो कभी कोई मर जाता है ना, तो उसमें क्या करते हैं हम लोग बहुत सारे चीज़ों का बॉडी में विलेपन करते हैं और धुआं अगरबत्ती वगैरह वगैरह। सो गॉड एज ह्यूमन बीइंग केम टू अर्थ, है ना, भगवान इंसान का प्रतिरूप लिया, है ना, वन अमंग अस इन ऑल रेस्पेक्ट, सभी चीजों में हमारे समान भगवान आया इस धरती पे, और एक्सेप्ट सिन, केवल वो पाप नहीं किया, दोष गुना नहीं किया। तो दैट्स व्हाट इन ऑल रेस्पेक्ट, दैट्स व्हाई गॉड इज कंसिडर्ड फुल्ली ह्यूमन एंड फुल्ली डिवाइन, है ना। सभी रूपों में वो इंसान के समान थे और 100% बहुत सारी कमियों के साथ हैं, इसलिए हम लोग फुल्ली डिवाइन नहीं है। आपको मालूम है राम का जन्म कहाँ हुआ है? कहाँ पे? अयोध्या, सरयू नदी के किनारे। कृष्ण का जन्म कहाँ हुआ? वृंदावन, मथुरा। ओके,
प्रोफेट मोहम्मद कहाँ? मोहम्मद अल्लाह जो मानते हैं, प्रोफेट मोहम्मद का कहाँ? मक्का। ओके। और गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ? तालवांडी, नाउ इट इज इन पाकिस्तान। ओके। और जीसस क्राइस्ट का जन्म बेथलेहेम, जेरूसलम, राइट, मॉडर्न पैलेस्टाइन। ओके, तो इस तरह से हम लोग कई तरह भगवान को वी सेलिब्रेट डिसिप्लिन। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। Enjoying the program. Now it's time for an energetic and colorful wishing dance. ना रहे कोई ख्वाहिश अधूरी, ना रहे कोई सपना अधूरा। यीशु दे आपको इतनी खुशियाँ कि आपके दिल का हर ख्वाब हो पूरा। Get ready to enjoy this vibrant performance. राजाओं के राजा की, प्रभुओं के प्रभु की, आइए सब मिलके कहते हैं यीशु मसीह की। यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन मेरा। यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन मेरा। यीशु ही आदि है, यीशु ही अंत है, यीशु ही जिंदा खुदा। यीशु ही आदि है, यीशु ही अंत है, यीशु ही जिंदा खुदा। यीशु मसीह की जय, 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 यीशु मसीह की जय। बैठे नहीं हो रहे, आपको अपने समय नू सारे पूरा करी गए। कहीं आए कहीं गए, बैठे नहीं हो रहे, आपको अपने समय नू सब पूरा करी गए। तारी बोली से हाथ देख लो, तारी बोली से हाथ देख लो, कोई दुनिया हो क्यों ना। आज जन में राजा जगते, जिधे राजा से नहीं हो रहा।
Wow, what a wonderful and massive performance. Please give them a thunderous round of applause. Every beautiful event comes to the end. Now we invite Ananya Di, the vice head girl of our school, to present. Respected principal, teachers, and all my schoolmates. As we conclude today's Christmas program, I take this opportunity to express our heartfelt. This festival brings peace, love, and joy to all. रोशन हो तुम्हारी जिंदगी जैसे क्रिसमस की लाइट, हर पल मिले तुम्हें खुशी, हर दिन हो merry and bright. Thank you for joining us. Have a blessed and joyful Christmas celebration. Merry Christmas and happy.